Hello students, and today's topic is adjectives, chapter number 9, and name of chapter is adjectives. Means today we are going to learn about adjectives. Students, first of all, read these sentences. Rohini has a pink dress. It was an interesting movie. Father bought 4 chocolates. So, in sentence, first the word pink tells us about the color of the dress. Pink is highlighted word. This is written in bold, and this word pink tells us about the color of dress. Means ड्रेस का कलर, ड्रेस की कलर को डिस्क्राइब कर रहा है. Which color of dress? Pink color of dress. Okay. It was an interesting movie. So in sentence 2, the word interesting tells us about the kind of movie. कि which kind of the movie? किस तरह की movie? Interesting movie. So interesting word tells us about the kind of movie. Okay. Now the third sentence is father bought 4 chocolates. So in sentence 3, the word 4 tells us about the number of chocolates. How many chocolates? 4 chocolates. How many chocolates did father buy? 4 chocolates. Okay. So these words pink, interesting and 4 tell us more about the nouns dress, movie and chocolates. Means these words like pink, interesting and 4 tells us more about the nouns dress, movie and chocolates. Or you can say that these words are qualifying the nouns dress, movie and chocolates. So they are used here to describe or qualify these words, these nouns dress, movie and chocolates. Okay. So adjectives are describing words that tell us more about persons, animals, places and things. So these words like pink, interesting and 4 are called adjectives. इन्हीं words को हम लोग क्या बोलेंगे? Adjectives. Why? Because they are describing the words, describing the nouns like dress, movie and chocolates, etc. Okay. So what is the definition of adjectives? Adjectives are describing words that tell us more about persons, animals, places and things. कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. वो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने का वर्क, उसको क्वालिफाई करने का वर्क करते हैं. एंड दैट टेल अस मोर अबाउट पर्सन्स, जो हमें जिस हम नाउन की बात कर रहे होते हैं, आइदर इट इज़ अ पर्सन और एनिमल और प्लेस और थिंग. मीन्स जिस भी नाउन की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देने का वर्क करते हैं, उसको और डिस्क्राइब करने का वर्क करते हैं. ओके. So this is the definition of adjective. Adjectives are describing words that tell us more about persons, animals, places and things. Okay. Now look at the position of adjectives. What is the meaning of position? Position means place. So now we have to see that the position or place of adjectives. कि हम लोग adjectives को कहाँ पे राइट करते हैं, किस प्लेस पे राइट करते हैं, किसके बाद में राइट करते हैं, किसके पहले राइट करते हैं. ओके. सो एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब. यूजुअली हम लोग एडजेक्टिव को उस नाउन के बिफोर द नाउन मीन्स उस नाउन के जस्ट पहले लिखते हैं जिस नाउन को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ओल्ड मैन. Here what is adjective? Old. And old word is describing the noun man. Old word किसको डिस्क्राइब करने का वर्क कर रहा है? Man को. So old word is adjective here.
and this is describing word because it is used to describe the noun man. So this is your adjective. But however, sometimes the adjective can be placed after a noun. बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के बाद में आते हैं. मीन्स जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या क्वालिफाई कर रहे होते हैं उस नाउन के बाद में आते हैं. मोस्टली क्या होता है कि हमारे एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन से पहले आते हैं. बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उनके बाद में आते हैं. ओके. For example, the man is old. Here man is noun. Okay. And old is adjective. तो देखिए man old वर्ड जो है यहाँ man को डिस्क्राइब करने का वर्क कर रहा है कि man क्या है old. बट old वर्ड जो आपका है वो इस नाउन के बाद में आया हुआ है. इज इट क्लियर? तो कभी कभी हमारे एडजेक्टिव्स उस नाउन के बाद में भी आ जाते हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. बट मोस्टली एडजेक्टिव्स उस नाउन के पहले आते हैं जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. ओके. नाउ कम एट द फर्स्ट एक्सरसाइज so that we can learn more about adjectives. So first exercise is underline the adjectives and circle the nouns to describe. What is the meaning of this question? Means you have to underline the adjectives and circle the nouns to describe. Adjectives को underline करना है और जिस noun को वो describe कर रहे हैं उस पे क्या करना है? Circle. So first question is the woman is happy to get back the purse. Here happy is adjective. Happy जो है वो हमारा adjective है क्योंकि ये किसी की quality को बता रहा है ना. एंड किसकी क्वालिटी को बता रहा है? वुमेन की. तो वुमेन को जो हैप्पी वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? वुमेन को. तो ये हमारी नाउन हो गई. इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन एंड सर्कल एंड अंडरलाइन दी एडजेक्टिव एंड विच इज एडजेक्टिव हियर? हैप्पी. तो हैप्पी को क्या करेंगे? अंडरलाइन. नेक्स्ट इज द मैन इज कैरिंग अ हैवी बॉक्स. हियर बॉक्स इज नाउन. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बॉक्स. और कौन सा वर्ड बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है? हैवी. सो हैवी इज एडजेक्टिव, सो अंडरलाइन इट एंड बॉक्स इज नाउन, सो इनसर्कल इट. ओके. नेक्स्ट इज द मैन इज वॉकिंग विद अ ब्राउन डॉग. हेयर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में? हेयर डॉग इज नाउन because we are talking about dog here. But which word is used here to describe the noun? Brown. Brown word is describing the noun dog. So brown is adjective. So underline it and circle the dog because this is the noun. Next is many guests were invited on the occasion. अब यहाँ पे guest के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. So guest is noun. So circle it. And which word is used here to describe the guest? Many. So underline many. Next is 5 girls were selected for the play. Here we are talking about girls. But how many girls? 5 girls. So 5 girls is used here to describe the noun girls or tell the numbers of the girls. That's why 5 is adjective, so underline it, while girl is noun, so circle it. Next is Mrs. Verma is wearing a red sari. Here we are talking about sari. And what is the quality of sari? That this is red in color. So red is adjective because it is used here to describe the word sari. And so underline it and circle the word sari because this is noun. Next is Fahim is driving his new car. So car is noun. कार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. And which word is describing the word car? New car. So new is adjective. Underline it and circle the word car. Next is Tania has very long hair.
So here we are talking about hair means, और hair की quality को कौन सा word describe कर रहा है? Which type of hair? Long hair. So long is adjective because this is used here to describe the noun hair. So underline it and circle the noun hair because we are talking about hair in this sentence. Okay. So do first exercise properly in your book. Underline or circle. Now come at the next topic. Types of adjectives. Okay, we have learned about the definition of adjectives and we have done one exercise also. हम लोग definition learn कर चुके हैं adjective की, पढ़ चुके हैं कि adjective क्या होता है and हम लोग one exercise भी कर चुके हैं. ठीक है. Now look at the types of adjective. How many kinds of adjectives are there? First is adjective of quality. Second is adjective of quantity. Third is adjective of number. Fourth is adjective of demonstrative adjectives. And fifth is interrogative adjectives. And sixth is possessive adjectives. So how many kinds of adjectives are there? 6 kinds of adjectives. Adjective of quality, quantity, number, demonstrative adjective, interrogative and possessive adjective. Okay. अब यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए कि इन एडजेक्टिव्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एडजेक्टिव, इनका क्या वर्क होता है, बट इन डिटेल वी विल स्टडी फर्दर. ओके. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, कि जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो किस तरह की है, कैसी है, वो लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, वाइट, ब्लू. ठीक है. So these are adjective of qualities and adjective of quantity tell about the quantity of nouns. जो हमारी nouns uncountable होती हैं उनकी हम लोग quantity को measure करते हैं ना, उनको count तो नहीं कर सकते हैं. So वहाँ पे हम लोग adjective of quantity का use करते हैं. So it tell us about the quantity of nouns. Third is adjective of number. Tell us about the number of nouns. जब हम लोग numbers को count करते हैं 1 2 3 4 5 6, so that is called adjective of number. Demonstrative adjective points out to nouns. Demonstrative adjective का use point out करने के लिए करते हैं. point out का मतलब किसी चीज की ओर संकेत करना, इशारा करना. Interrogative adjectives ask questions. You all know that what is the meaning of interrogative? Means question. So interrogative adjectives are used to ask questions. Next is possessive adjectives show possession. You have learned already about possession, that what is possession. So possessive adjectives show possession. For example, हमारा, उसका, मेरा, ठीक है, आपका. These are possessive adjectives. Okay. So first of all, we will learn about adjective of quality. First kind of adjective is adjective of quality. So now we will learn the definition and examples of adjective of quality. Read the following sentences. This is a story book. Here it tells us about the kind of book, कि book कैसी है, story book है. ठीक है. तो story book जो है, story word हमारा क्या हो गया यहाँ पे noun नहीं है, ये book की quality को बता रहा है कि book हमारी कैसी है, story book. So it tells us about the kind of book, कि book किस तरह की है, वो कैसी book है, story book है. So story word is adjective of quality here. Next, Meetu is a good dancer. अब here good word tells us about the kind of dancer, कि वो कैसी dancer है, good dancer. Good dancer, bad dancer. ठीक है. तो यहाँ पे good word जो है वो डांसर की क्वालिटी को बता रहा है. इट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ डांसर और टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डांसर. कैसा डांसर, गुड डांसर. ओके. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, look at these lines. These words story, good are adjectives since they tell us about book and dancer. Story tells us about the kind of book, while good tells us about the kind of dancer.
that Mitu is. So good and story are adjective of quality. Understood? अब समझ में आ गया सभी को कि जो हमारे वर्ड्स यहाँ पे स्टोरी और गुड, ये किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं, उनका काइंड को बता रहे हैं कि वो किस तरह की बुक है, स्टोरी बुक। वो मीतू किस तरह की डांसर है, गुड डांसर। तो ये हमारे वर्ड्स किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किस तरह की है। सो दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, learn about the definition of adjective of quality. Adjective of quality is an adjective that tell us about the kind or nature of a person, thing or animal. For examples, small, big and large, etc. It answers the question what kind of. कि जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो किसी भी पर्सन, थिंग और एनिमल की काइंड, मतलब वो किस तरह की है या उसके नेचर को डिस्क्राइब करने का वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग, स्मॉल, लार्ज, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट, रेड, ठीक है, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन, तो आप लोग क्या राइट करेंगे, व्हाट काइंड। व्हाट काइंड ऑफ मीन्स किस तरह की, ठीक है, कि वो नाउन किस तरह की है, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, रेड, वाइट, ग्रीन, ओके, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ लुक एट दी exercise related to adjective of quality. So first sentence is, the rose is a beautiful flower. Here we are talking about flower. And which kind of flower? Beautiful. So you have to underline the adjective of quality. So beautiful is adjective of quality because it is describing the quality of flower. So underline it. Next is, Mumbai is a big city. So here we are talking about city, Mumbai. And which type of city? Mumbai is which type of city? Big city. So underline this adjective big. Next is, Ashoka was a great ruler. Here we are talking about Ashoka or ruler. Which type of ruler? Great ruler. So great is adjective of quality. So underline it. Next is, honest people are always respected. So we are talking about people, and which type of people? Honest. So underline the adjective honest. Next is, Madhu is a good dancer and an excellent cook. So which type of dancer? Good dancer. So good is adjective of quality. Underline it. And excellent, which type of cook? Excellent cook. So underline the words good and excellent. These both are adjective of quality. Next is, my grandmother is old and weak. So my grandmother, क्या quality है उनकी? Which kind of कैसी grandmother? Old and weak. ठीक है? So underline the words old and weak. These are adjective of quality. Next is, the children are sweet and intelligent. Which type of children? What kind of children? Sweet and intelligent. So underline the words sweet and intelligent. They are adjective of, these are adjective of quality. Next is, Tagore was a great poet and author. Tagore, what kind of poet and author? Great poet and author. So great word is adjective of quality here. Okay students, so do this exercise properly in your book, okay, and learn the definition of adjective and adjective of quality also, okay, and I will explain rest kinds of adjectives: adjective of quantity, number, demonstrative adjective, interrogative adjective and possessive adjectives in the next video. Okay.